जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 9th क्लास ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 force and laws of motion. So we are going to do notes part 2 in this video and we will discuss about the first law of motion and inertia. So let's get started. So ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ एक गल रिवाइज कर ली जो पहले नोट्स पार्ट 1 में पढ़ी सी आपां कि वी नो दैट एन अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स जो नेट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह गल असीं रिपीट कर रहे हैं बिकॉज यह गल बड़ी इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर दैट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन the uniform motion of an object, though unbalanced force is required to change the state of motion. ठीक है। However, practically it is difficult to achieve a zero unbalanced force because of the presence of the force of friction acting opposite to the direction of motion. So actually no net force ਜਿਹੜੀ ਹੈ a condition is actually theoretical. Practically we do not have this condition of where no net force is there. There is always some force present and which we call is the force of friction which opposes the motion. ठीक है। हुन आगे Newton's 3 fundamental laws govern the motion of objects and these 3 laws are known as Newton's law of motion. So first law of motion की कहंदा है, the first law of motion states that an object continues to be in a state of rest or of uniform motion. uniform motion जरूर लिखना है. Do not write motion, you have to write uniform motion. It means the motion which is at a constant speed and in the same direction. ठीक है। In a straight line unless acted upon by an unbalanced external force. ठीक है। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨਸ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। You have to memorize it and ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। In other words, all objects resist a change in their state of motion. State of motion means it includes state of rest because state of rest is also considered as state of motion in which the speed is zero. जो तुसीं कहने speed is zero, it means the body is resting. ठीक है। So असी state of motion मतलब कि generally use कर सकते हैं for states of motion as well as the rest. ठीक है। So in other words, all objects resist a change in their state of motion. आएगा first law of motion. ठीक है। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity, which means speed and or direction, मतलब कि यहाँ speed घट वध सकती है या direction change हो सकती है या both, speed भी change हो जाए direction भी change हो जाए, because velocity is a vector quantity. Velocity includes magnitude as well as direction. ठीक है। So when an unbalanced force acts on an object, velocity changes, and velocity changes means the object gets an acceleration. Why? Because acceleration a is equal to v minus u by t. So when बच्चों v changes, that means there is an acceleration, because if what you call velocity is not changing, there is no acceleration, because acceleration the definition की है, it is the rate of change of velocity. So अगर velocity change होगी, so ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि when a force acts on an object, the velocity changes or the object gets an acceleration. It is the same thing stated in two different ways. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ its velocity changes, और ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the object gets an acceleration when it is acted upon by an unbalanced force. ਹੁਣ ਬੱਚੇ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ है बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्हों बड़े ध्यान नाल देखियो और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ मैथमेटिकली फ्रॉम द सेकंड लॉ the first Newton law can be easily proved. So we know that F is equal to ma, as second law of motion which ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, but you just remember that as per the second law of motion F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration, और F is equal to m वाला ते a is v minus u by t, देखो because a is equal to v minus u upon t. ठीक है।
हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी ऊपर चला गया और एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. पुटिंग एफ इज इक्वल टू 0 अर्थात नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कहते हैं ना कि व्हेन an object continues to be in a state of rest or of uniform motion until and unless acted upon by an external force. If there is no external force, body will continue to stay in rest or continue to move in uniform motion. So condition is there is no external force, that means F is equal to 0. So F is equal to 0 इत्थे पा देता, 0 into 2t is equal to mv into mu. So 0 into t is 0 और फिर एम वी माइनस एम वी एम यू इज इक्वल टू 0 हो गया तो यह बराबर हो गए एम वी बराबर एम वी इज इक्वल टू एम यू, एम और एम कट गया, इट मीनस वी इज इक्वल टू यू. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਟੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ when body is rest or body is moving uniformly. Suppose the body is at rest, which means u ਜਿਹੜੀ initial velocity ਹੈ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ when body is at rest. अगर u 0 है तो v is equal to also 0, it means there is no final velocity. That is the object continues to be at rest. अगर initial velocity 0 है, final velocity is also 0, it means the object continues to be in a state of rest when the force is 0. एक part आ गया. ਹੁਣ मान लो कि object is moving at a uniform speed of x meter per second. Suppose u is equal to x meter per second. Initial velocity is x meter per second. Then v also is equal to x meter per second because v is equal to u. ठीक है, which means that the body continues to be in the state of uniform motion. ਉਹਦੀ velocity जो initial सी वही initial रहती है, final वही रहती है, the velocity does not change. So this is nothing but the mathematically stated the first law of motion, that is when f is equal to 0, जब force 0 होता है, body continues to be in a state of rest, u is equal to 0, v is equal to 0, or body continues to be in a state of uniform motion. If u is equal to x meter per second, v also is equal to x meter per second. That means the velocity does not change, velocity does not increase, velocity does not decrease, there is no external force, net force is 0, body continues to move at the velocity of x meter per second. So बच्चों यह तरीका एक भी ऐसी कह सकते हैं कि मैथमेटिकली वी आर प्रूविंग दी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ਹੁਣ आखिरी स्लाइड ਵਿੱਚ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਫਸਟ ਲॉ ऑफ मोशन. The natural tendency of objects, natural means बल्कि by nature, not acquired, it is inherent. Tendency होने दी रुचि, वृत्ति. The natural tendency of objects to resist, विरोध करना, a change, बदला in their state of rest or of uniform motion is called inertia. ये देखो बच्चों, this statement is quite similar to the first law of motion. In other words, if it is at rest, it tends to remain at rest. ਜਿਹੜਾ body object है, if it is moving, it tends to keep moving. This property is known as inertia. For this reason, the first law of motion is also known as the law of inertia. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ कि why the first law of motion is also known as the law of inertia, because of the definition of inertia. मतलब कि inertia भी जो definition है वो same है which the first law of Newton states. That is why the first law of motion is also known as the law of inertia. फिर अगली गल इनर्शिया ਨਾਲ जुड़ी हुई, इट इज़ ऑब्वियस, बल्कि स्पष्ट है, इट डज नॉट नीड एनी प्रूफ दैट हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया. बल्कि इट इज़ वेरी इजी टू मूव अ साइकिल बाय हैंड बाय पुश दैन टू पुश अ ट्रक. मैं ट्रक ਨੂੰ पुश करा तो नहीं हिलेगा, साइकिल ਨੂੰ मूव करांगा हिल जाएगा. साइकिल हल्की हैगी है, ट्रक बड़ा हैवी हैगा. क्यों? Truck is heavier, so its inertia is more. It means its resistance to change of its state of rest is more. ठीक है. Thus the mass of an object is a measure of its inertia. लाइन भी कंट कर लेनी है. The mass of an object is a measure of its inertia. More the mass, more the inertia, and vice versa. अर्थात lesser the mass, lesser the inertia, more the mass, more the inertia. ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ whatever I have written here in the notes, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ.
सारे नूं कंडेंस करके ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।